Good morning students, standard 7 science chapter 5 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसका एक्सपेरिमेंट हमको करना है। क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? उसमें हमको लेना है एसिड, बेस और इंडिकेटर। एसिड, बेस और इंडिकेटर। नाउ लुक एट हियर, दिस इज द एसिड, hydrochloric acid. This is the base, sodium hydroxide, and this is the indicator, phenolphthalein. This is the test tube, this is the dropper, and here is the litmus paper, blue litmus paper and red litmus paper. Now take one test tube, fill it 1/4 of with hydrochloric acid. Look at here, this is the hydrochloric acid. We use this acid for this experiment. Now add 2-3 drops of phenolphthalein in this test tube. Now shake well. Look at here, no change in this solution. This is the acidic solution. This is called acidic solution because we use hydrochloric acid in it and we add indicator as a phenolphthalein. Now we take another test tube. This is the base, we use it, sodium hydroxide. Now we add 2-3 drops of indicator, phenolphthalein. The basic solution become dark pink color. Understand all of you? This is the basic solution. This is the basic solution. And this is the acidic solution. Now this is the acidic solution. We add in this solution base also. Look at here, there is no change in this solution. Why? Because this is the न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन. हमने क्या किया, एसिडिक सॉल्यूशन बनाया, फिर हमने बेसिक सॉल्यूशन में देखा कि पिंक कलर बन रहा है बेसिक का, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ही जब हम बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है. इसमें कोई भी कलर चेंज होता नहीं है. नाउ वी check this with litmus paper. Here is the blue litmus paper. We check it. There is no change in blue litmus paper. Now we check with red litmus paper. There is also no change in red litmus paper. That is why this is called neutralization of this solution. Here is the equation of neutralization. We use acid as a hydrochloric acid. We take base as a sodium hydroxide. As an indicator, we use phenolphthalein. So we
Salt means NaCl plus H2O. This is called neutralization reaction. क्या होता है, हमने एसिड लिया, उसके अंदर बेस डाला और उसके अंदर इंडिकेटर डाला. इंडिकेटर हमने क्या कौन सा लिया है, फिनोक्टेलिन. तो हमको क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड very easily neutralization reaction. Thank you.